This is your YouTube channel, Blind Justice, and the subject today in this vlog, which is really to educate people to see what's going on around and be able to judge better that who is right and who is wrong, and who is just and who is unjust. And you will find at the top of the list in the whole world, you will find in many circumstances, you will find that the top of the list will be the Zionists, the Jews, whether it was in Second World War or the First World War, or even when they stepped in into the Palestinian land as a refugee, that how Ben Gurion, how Ariel Sharon, how the Golda Meir, how the the man with a dark glass on his one eye, it's a blind general, and see that how they cheated, how they were helped by Britain and France and then the United States times and times again, and they bought leftover of all the tanks, the jets, the bombs, the ammunition, and these unarmed Palestinian, and they had to just lock their homes and take the keys, which up until now they have those keys. The house has been demolished, and you have seen they have changed the names of their villages, their cities, their roads, and now they think that by colonizing this by force and going at war with them, they just you just can't get rid of this scum. And the reason is the sport they get, is the bloodline. It is the drip, continuous blood drip, which is given to them by the United States of America. Themselves, they are covered, they are diaper babies, they cry and they yell. And in this particular, I just want to show you that, lucky ones, if you want to mix chance with the luck, you are the most stupid person. And I again will repeat in this that a mental person who should be in the straitjacket, and I'll demonstrate only for demonstration reason, I'll put that who should be in there. Number one is the Natenyahu, the dirtiest, the filthiest, the bar criminal of all. Then is their defense minister Gallant. Then is his army chief. And then I think in the list comes those two scums, the finance minister, and see him crying like a baby now in this here, because now he knows that he is receiving casket after casket and debts after debt after debt. It's not his son, it's not his daughter, it's not his wife, not his sister, not his mother whose caskets, whose coffins are being brought in. It's a common Jew, and you can see that this history is repeating itself. What is it happened with all the pacts they made in the west part of new part of the city of Jerusalem, and how they broke it. It's in their blood, it is in their DNA. They are a cheat. They always go back at their words. And this is what they did with Jordan, this is what they did with Egypt, this is what they did with all the Arabs. All the pacts they broke. And this is what I think 1443 years ago in the fort of Khabar, outside skirts of Medina, they did the same thing when the Ghazwa Khandak, or that war where that great big tunnel was dug so that the Quraysh or those people couldn't come to Mecca, and then they could attack few Muslims in Medina, including the Prophet of Islam, Muhammad, peace be upon him, but they cheated him, and their cheat was discovered, and soon they were all killed by their own people. And this is exactly what happened when those Jews said, how come you are breaking your pact with Arabs and you are stealing their homes, their land. And that has been continuing from 1949 till now. He died dog's death. Ariel Sharon, his body was smelling. Moshe Dayan died dog's death. Golda Meir died dog's death.
And Ben Gurion died dog's death and he resigned, and so that he could just play all kind of mischief, and he cheated, the United States, other people, and see how many Security Council resolutions, and even after Camp David Accord, you see how they have done, and they have taken Rafah. So, they are the people you can't trust them. They are the people you cannot have any faith in them. They are the people. So now I think you are cornered and they are at the dead end of the street and they must be now finished. Not a single one should be left. And I am not talking of those Jews who don't want to fight. I am not even touching those, really in spirit they follow Torah, or they are real Jews. The one who never want to fight with the Muslims or Arabs, because they saved their lives times and times again, sheltered them, allowed them to come in and worship on the Wailing Wall. While they've been taken by Rome, it has been with the British, then from 1917, from the Ottomans back into 1949. Before that it was again controlled by Jordan, and it was both West Bank or this, but the cheating the king, they did this. They broke all the pacts. So they are doing exactly the same thing now, and I'm going to show you that how the dead bodies are arriving in the hospital, and I want to show you that how number of times this chief of army staff, who is the leader of the killing machine, he has escaped death, and soon you will see that each one of them will die a very horrible death. I am afraid they will. And very soon you will see that how horribly he is pushed out, he is dragged out of the White House, insulted and held from his hair, and unfortunately his shadow has also fallen on the Democratic Party and Kamala Harris, who have very little role to play in this game, where supplying dumb bomb, giving them billions and billions of dollars, and playing dirty on both sides of the fence and trying to pretend that you want ceasefire, but in fact you don't. You are a part of an investment. You want Israel because you are a Jew. You are Israel. You're not a Christian. Those who support that, when they spit on your face, when they cannot tolerate your cross even in their graveyard, although the fallen soldier fought for IDF, then how the hell do you think you have any decency or any faith or any religion to keep supporting them so that they can kill the Palestinians, the poor Palestinians, unarmed, women and children? Shame on you. And UNRWA now, so that you want to stop their health care, stop their food, stop their education, and you so that you can strangulate them and force them to submission. You did that in Suez Canal. You did that in Egypt, and in Sinai Desert. You did that in Syria. You have a long history of cheats and deceives, and going back on your words. So how the hell the board will not want to eliminate you and say that you have no right to exist? And I hope, God, in this the educational message will be loud and clear, and people will never ever trust them. उड़ते बच गया है, और ये आप समझ रहे उसकी लक है, या जो भी सूरत हाल आप कह लें, कि दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ है कि इस्राएल का आर्मी चीफ आज जिंदा बच गया है, और ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन इसके साथ जो अजीबोगरीब सूरत हाल है कि आज हिजबुल्लाह की जानिब से 500 किलोग्राम का बुरकान मिसाइल मारा गया है मेटुला सेटलमेंट में, और वहां पर ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल सकते हैं कि किस तरह वहां जो सेटलर्स थे, बहुत सारे लोगों को पता नहीं सेटलर्स कौन सा जिनको ये अस्पताल लाया जा रहा है, जिन इलाकों में फलस्तीन के हो, लिबनान के हो, शाम के हो, कब्जा करना होता है, कब्जा करके उसके बाद जिन लोगों को वहां पर लाकर बसाया जाता है उनको सेटलर्स कहते हैं। ये वो लोग हैं जो आकर लोगों के घरों पर कब्जा करते हैं। इनको मार दिया गया है 5, और ये इतनी तबाहकुन सूरत हाल हुई है कि आप ये सोचें कि ये गालिबन इनके बारे में कहा जा रहा है कि सारे फौजी थे और सेटलर्स भी थे, और इजराइल की चीखें आज निकल गई हैं कि 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरे इजराइल की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ये सारे का सारा मामला समझे, लेकिन सबसे पहले अहम डेवलपमेंट है हुआ ये है कि इजराइल का आर्मी चीफ असल में गया हुआ था गजा की साइड पर, नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप पर इजराइल का आर्मी चीफ एक जगह मौजूद था
जो फलस्तीनियों के वहां घर है, ये वहां पर एक घर में महफूज था, बड़ा महफूज था घर। अब सीन ये हुआ है कि वहां पर हमास की फोर्सेस की जानिब से उसकी रेकी की गई। उनको या तो अंदर से खबर मिली या इसराइल के अंदर से या बाहर से, जो भी सूरत हाल है, बहरहाल खबर उनको मिली है। हुआ ये है कि हमास की जानिब से एक एंटी टैंक शेल वहां पर फायर किया गया। अब जैसे ही इजराइल का आर्मी चीफ वहां से निकला है, चंद मिनट्स के बाद वहां पर इजराइल की फोर्सेस पर बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन हुआ और इसमें तकरीबन उनकी 888 यूनिट के 4 फौजी मारे गए हैं। और आप इमेजिन कर लें कि ये हाउस बेसिकली जबालिया कैंप में था और इस सूरत हाल में ये असल में गजा का और फलस्तीनियों का ही था, लेकिन आर्मी चीफ वहां पर मौजूद था। आप समझ लें कि बिल्कुल थोड़ी सी टाइमिंग का फर्क रह गया है। अगर वहां पर आर्मी चीफ से जो पहली बड़ी खबर सामने आ रही है, बहुत बड़ा नुकसान हिजबुल्लाह की जानिब से इजराइल को पहुंचाया गया है, बहुत बड़ा धचका और एक तरह से उनके रीढ़ की हड्डी को हिट किया गया। सबसे जो हसास तरीन बेसेस, जो 4 बेसेस को कोऑर्डिनेटेड अटैक हुआ, वहां पर अब ये ताजा तरीन कंफर्म्ड रिपोर्ट्स इजरायली मीडिया की जानिब से आ रही हैं कि वो तमाम फैसिलिटीज हिट हुई हैं, तमाम फैसिलिटीज के अंदर कैजुअलिटीज हुई हैं। ये इजरायली मीडिया कंफर्म कर रहा है। रीढ़ की हड्डी हैसियत रखने वाली बेसेस हिट हुई और वहां पर कैजुअलिटीज इस वक्त इजरायली मीडिया जो है वो कंफर्म कर रहा है। तो ये सबसे बड़ा हमला अब तक का हिजबुल्लाह का बन चुका है। Correspondents in Tel Aviv quoted local sources as saying that Hezbollah launched missiles and drones in a special way. स्पेशल वे के अंदर उन्होंने मिसाइल भेजे। A sensitive strategic base, जो सबसे हसास और स्ट्रेटेजिक लेवल की बेसेस है, यानी जो कौमी सलामती वाली बेसेस है, जहां से जंग मैनेज होती है, उनको हिट किया। इन द इलाकियम एंड एन शमीर एरियाज नियर हदेरा and the Adam base east of Tel Aviv and casualties occurred inside the bases. Tel Aviv की ये जो बेस है आदम, यहां पर ट्रेनिंग कैंप था, मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल वाली ये बेस है, ट्रेनिंग कैंप जहां पर मतलब उनकी स्पेशल फोर्सेस आकर ट्रेनिंग करती हैं, उसको हिट किया गया। और इजरायली मीडिया ये बता रहा है कि इन तमाम बेसेस के अंदर कैजुअलिटीज हुई हैं। तो बहुत बड़ी हजीमत और बहुत बड़ी शिकस्त है। और मैं आपको बता दूं, जो हम पहले भी चीज डिस्कस की, कि एक चीज जो नेतन्याहू को घुटने टेकने पर मजबूर करेगी, सबसे ज्यादा जो ऊपर वाला फैक्टर है, वो किसी का दबाव नहीं, किसी का कुछ भी नहीं, वो है इसके फौजियों की कैजुअलिटीज और अंदर से बढ़ता हुआ प्रेशर। यही है जो सबसे बड़ा फैक्टर है जो इसको मजबूर करेगा। कैजुअलिटीज जब हो जाएंगी जिस तरह से हो रही हैं, अगर यही 10-15 दिन सिलसिला मजीद 20 दिन जारी रहता है, नेतन्याहू आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये तो भाई फौज ही जब नहीं लड़ पा रही, वो दुनिया का प्रेशर तो मेंटेन कर सकता है, लेकिन फौज लड़ ही नहीं पा रही, तो फिर वो कैसे खुद जाकर हथियार उठाकर लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। और बेसिस के अंदर भी बैठे उसके फौजी अगर महफूज नहीं है तो फिर इसके अलावा साथ है इंजीनियरिंग जो फोर्स है, इंजीनियरिंग बटालियन है, जो सबसे बेशकीमती, सबसे इंपॉर्टेंट और गजा जंग में उसका बड़ा किरदार, और एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाना, निकालना, टनल्स को डिस्कवर करना, टनल्स को तबाह करना, मतलब जो इंजीनियरिंग बटालियंस होती हैं, जो आप इसको समझ सकते हैं, उनका बड़ा मुश्किल काम होता है और बड़ा मतलब जंग के लिए इनकी बहुत जरूरत होती है और ये बड़ी ही बेशकीमती ये फोर्स होती है। अब खबर आई है जनाब, वो तो खत्म ही हो चुकी है। यानी इजराइल ने कई साल लगाकर जो बनाई थी इंजीनियरिंग फोर्स, उसको खत्म कर दिया। खत्म किसने किया? गजा ने किया, क्योंकि अभी तक तो वो वहीं पर ही इस्तेमाल हो रही थी। डिसीजन टू एस्टैब्लिश अ न्यू इंजीनियरिंग बटालियन फ्रॉम द रेगुलर फोर्सेस इन लाइट ऑफ द मैन पावर क्राइसिस इन द आर्मी। अब वो कह रहे हैं कि रेगुलर फोर्स से एक अलग से इंजीनियरिंग बटालियन बनाई जाएगी। अब रेगुलर फोर्स से जो वो बना रहे हैं, ये और भी ज्यादा उनके लिए खतरनाक और हजीमत वाली बात है, क्योंकि रेगुलर फोर्स तो है ही 1.5 लाख के करीब, रिजर्व फोर्स 4 लाख के करीब है। तो वो कह रहे हैं कि मैन पावर क्राइसिस, वो कह रहे हैं इतना मैन पावर क्राइसिस है कि रिजर्व या नई भर्तियां नहीं हो पा रही। तो वो जो रेगुलर फोर्स है, जो है ही 1.5 लाख के करीब, उसमें से अब फौजी निकालकर इंजीनियरिंग बटालियन बनाई जाएगी। मतलब इस लेवल का मैन पावर क्राइसिस है वहां पर। ये सारे सबूत है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप मिलिट्री डायनामिक्स को समझते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि रेगुलर फोर्स तो वो होती है ना कि जिसके जरिए मतलब आपने बस बचाना है अपने कंट्री को, जो कि ये दरअसल कब्जा है। रेगुलर फोर्स में अगर ये हालत हो गई है, जब आपका बिल्कुल आखिरी वो बैटल लड़ी जाती है, तो रेगुलर फोर्स फिर मतलब रिजर्व फोर्स तो उतनी ट्रेन नहीं होती, उसकी आपकी जो सारी हिफाजत है वो तो रेगुलर फोर्स कर रही होती है। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि उसमें से अब इंजीनियरिंग बटालियन, यानी इतने भी उनको 5000 बंदा भी अवेलेबल नहीं है कि वो उसके इंजीनियरिंग फोर्स जो है वो बना सकें। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ी खबर है कि इंजीनियरिंग पूरी फोर्स को जो है वहां पर गजा ने खत्म किया। ये मजीद रिपोर्ट्स आएंगी इस हवाले से।
अच्छा, शिनबेत ने आज एक और खबर दी है। शिनबेत ये कह रही है, जो मोसाद के बाद दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो ये कह रही है कि मजीद जो ईरानी एजेंट्स हैं उन्होंने मजीद ऑपरेशंस किए हैं और उनको गिरफ्तार किया गया है। अरेस्ट ऑफ इजरायली सिटीजंस ऑन द चार्जेस ऑफ स्पाइंग फॉर ईरान। इजरायली सिटीजंस, इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो रहे हैं। इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा ब्रीच हुआ है कि इजराइल के अंदर से ये नेटवर्क काम कर रहे हैं। इजरायली सिटीजंस कभी भी ईरान अपना नेटवर्क वहां पर कायम नहीं कर सका इजरायली सिटीजंस के जरिए। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जिनके पास इजरायली पासपोर्ट्स हैं, इजरायली शहरियत है, वो ईरान के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ईरान की जो है वो कामयाबी है। आगे नाज़रीन चले तो जरा आइजन कोड का एक बयान देखिए आखिर में। नेतन्याहू इज प्रैक्टिकली कोऑपरेटिंग विद द ईरानियन स्ट्रेटजी ऑफ ड्रेनिंग इजराइल अंटिल इट कोलैप्सेस इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एक्सटेंट ऑफ थ्रेट। वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू जिस तरह से जंग को लेकर चल रहा है, ये तो असल में ईरानियन स्ट्रेटजी है। नेतन्याहू असल में ईरान का फायदा कर रहा है इस जंग के जरिए, यानी जो ईरान की स्ट्रेटजी है वो ईरान को जरूरत ही नहीं पड़ रही, बल्कि नेतन्याहू खुद उनकी स्ट्रेटजी को पूरा कर रहा है। क्योंकि ईरान और एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी यही है कि इसराइल को ड्रेन करना है, इसराइल के रिसोर्सेज को निचोड़ना है, यानी उसकी अस्करी पावर को आहिस्ता आहिस्ता तबाह करना है, उसकी इकोनॉमिक पावर को, उसकी लेजिटिमेसी को, उसके इत्तेहादियों को, ये तमाम जो है ना, इसको ड्रेन करना है। तो वो कह रहा है कि नेतन्याहू इस बात को नहीं समझ रहा कि हम अचानक से जाकर कोलैप्स हो जाएंगे और हमें किस। Please subscribe to this channel and leave your kind comments. Press the bell button and subscribe so that the latest vlog or the analysis reaches you in time.